Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to start part 3 of digital documentation chapter. In this part we are going to learn about some page formatting features. First of all, let us learn what is the meaning of page formatting. In the last class we have learned that formatting means making changes in the appearance of the text. So when we say page formatting, it refers to making changes in the layout of the page by changing page orientation, page margin, inserting header, footer and page number, inserting images, shapes and special characters, applying border and background to a page, inserting page break, dividing page into columns, and formatting shapes and images. Let us see how we can do this one by one in our software. This is our LibreOffice Writer. Now we want to make some changes in the layout of the page. So first we have to go to the format menu. From there we have to click on page style. This dialog box will appear which consists of various tabs. It has organizer. So first is the style. If we want to change the style we can change from here, or you can take the default style. Then we have page tab. So this shows us the different properties of the page. Like here it is showing the format is A4. If we want to change the format, so we can change the format here, and whatever the changes you are doing, that you can see here, it is getting previewed here. If we take it as B4 ISO, so this will be the type of page it is showing here. Currently we want it as A4 size only, so let us make it to A4 size. This is the width and the height. If you want to increase, you can click on the up arrow. If you want to decrease, you can click on the down arrow, and the width and height is in centimeter. Then comes the orientation. Orientation means how the page will be placed. By default, it has the portrait orientation, that is, length is to the left and right and breadth is to the top and the bottom. Now by default, our page is in the portrait mode. If we want it to do in the landscape mode, we can click on the landscape option and click on apply and then OK. So it will make the page to change into orientation. You can see here now this is the landscape orientation. If we make the page size a little small, then you can see here this is the landscape and the earlier one was the portrait. So this is the portrait orientation. Next is, we'll again go to the format menu. Choose here page style. So this dialog box has again appeared. Now let us apply the border. Go to the borders tab. These are the presets of the border: no border, all four borders, left and right border, top and bottom border, and left border only. Let us take this one. And these are the line styles, the type of line for the border which we want to take. You can choose any one according to your requirement. Color, if you want any particular color, you can take the color. Otherwise, you can let it be blank also. Black you can take. Then width is 0.05 point. So you can increase the width from here or you can decrease the width as per your requirement. Then click on apply and OK. Now you can see here the page has come with a red color border around it, and the borders line is that which we have chosen. Now the gap between the edge of the paper and from where the text is being started, this gap is the margin. So we have four margins: top, bottom, right and left. We can increase or decrease the size of the margins. Again, same thing, format menu, page style. In the page tab, you will find the margin option, left, right, top, bottom. You can increase or decrease the value as per the requirement. Now you can see this changes here. We have decreased the value of the left margin and the top margin. So you can see the changes that margins are getting reduced and right and bottom margins are as it is. This is the layout setting. This is the page number. If we want it in the form of number, numeric digits 1, 2, 3, we can keep it the same way. If we want it in this form, any of the forms, we can choose from here and click on apply and OK. So here we have changed the margins. Now you can see the changes in the margins.
the top margin and the left margin have decreased, whereas the right margin and the bottom margin are the same. Next is inserting the header and the footer. Like in your body, the head is at the top and foot is at the bottom. So same thing, header is always placed at the top of a document and footer is always placed at the bottom of the document. हेडर को आप पेज के बिल्कुल टॉप पे लगाते हैं और फुटर को आप पेज के बिल्कुल बॉटम में लगाते हैं. What is the need of inserting the header and footer? Header is inserted at the top of the page and footer is inserted at the bottom of the page. Whatever you will write in the header and the footer part, only you have to write it once. आपको सिर्फ एक पेज पे वो लिखना होता है और वो आपके सभी पेजेस पे अप्लाई हो जाता है. जैसे मान लीजिए आपकी जो बुक्स पब्लिश होती हैं, तो आपने अपनी बुक के ऊपर देखा होगा साइड में आपकी बुक का नेम लिखा होता है टू द राइट साइड और इन द मिडल, एंड बुक के नीचे बिल्कुल बॉटम में पेज नंबर लिखा होता है. तो जब बुक को प्रिंट किया जाता है, इट इज़ नॉट दैट कि द पर्सन हु इज़ टाइपिंग ही इज़ राइटिंग अगेन एंड अगेन. ही अप्लाइज दिस feature of header and footer. Let us see how it is inserted. Click on insert. Here is the option, last option, header and footer. Choose the header option, default style. Now you can see the marking here, the cursor is blinking. This is the header. Let us write here chapter 3 digital documentation. We have selected this one. Increase its size, align it in the center. Remember, this we have done before from the formatting toolbar. So this is our header. Now you can see if I move to the next page, I have written only this on the first page. Now if I move to the second page, you can see chapter 3 digital documentation has come automatically without my being typing it. ये अपने आप आ जाता है, आपको इसे बार बार टाइप नहीं करना पड़ता. Same is the case with the footer. Let us go to the footer option, insert menu, header and footer, click on footer. Take the default style. You can change the style as per your requirement. So this is the footer. This is the second page, so you can apply it here also. Like here it is coming footer default style. I want the page number. Click on this drop down arrow, right? Insert page number. So you need not to type the page number, it will automatically come. Let us go to the second page and check it. Header is there. Now you can see here that automatically 2 has come. So this is the footer part. Understood header and footer? Header is the thing which is placed at the top of the document. Footer is placed at the bottom of the document. Both needed to be placed at one time, that is to be inserted at one time only, and they are automatically applied to all the pages in a document. Understood this thing? Then next comes is applying the color to a page. Now we want to add some color to the page. By default the page of the color is white, so we want to apply some color or some gradient. Go to the format menu, click on again page style. Now here we have is the area tab selected. First it is none, then we click on color. So if we choose any color from here, that color will be applied to your page. Click on apply, that color has come. Similarly, if you want to change the color, you can change from here. This is the way the color is changed. Then if we want it to be a gradient, so we can click on gradient, and there are so many gradient styles here. You can choose any one of them and click on apply. So this is the way your page will get the color. Okay, so this is the gradient option. So there are some properties of the gradients which you want to change, like it has a type, linear, axial, radial. Linear will be this form. If you want it to be axial or radial or ellipsoid or quadratic, accordingly you can make the changes. Okay, next we have is bitmap. If you click on the bitmap option, it shows some predefined formats. You can take any one of them and apply them to your page. Again you have to click on the apply option. You can take any other also and click on apply. So this way your page settings will get changed. So this is the page color or the different things, gradient or bitmap, which you can apply on the
page. Then we have the pattern option. In the pattern option we have this one. If you want to apply any one of them, you can apply, or if you want to change the color, then you can change the color also. Like suppose here we have yellow color and here we have white color, so we can make the changes like this. Okay, next is hatch. Hatch is also something like the pattern only. You can take any from this one. If you want to change the line color, you can change from here according to your requirement. Okay, so this way the changes can be made. Click on apply. Okay, so this way you can make the changes on your page and apply the color to the page. Clear this is? Now let us close it. We have learned about the page section, organizer, page tab, area, transparency. If you want transparency, you can click on the transparency option. If you don't want, then you can click on no transparency. Header and footer we have discussed. Borders we have discussed. Next comes is the columns. Now what is the meaning of columns? First you can see here the text which is coming. Here it is starting from the left margin and going till here. Now you must have seen in the newspaper कि आपकी जो text होती है वो कैसे लिखी होती है. पहले वो आपकी एक कॉलम में आती है, फिर नीचे से वो ऊपर की तरफ नेक्स्ट कॉलम में जाती है. तो इसी तरह से इफ़ यू वांट योर पेज टू बी अलाइंड इन 2 कॉलम्स और 3 कॉलम्स और 4 कॉलम्स, तो आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं. एंड देयर कैन बी कॉलम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो आपको क्या करना है, दिस इज़ योर टेक्स्ट. यहाँ पे आपको देयर इज़ अ कॉलम टैब. यहाँ पे इट इज़ शोइंग कॉलम्स, सो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ कॉलम्स. यहाँ से आप कॉलम्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. दिस इज बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम होता है. ये आपके 2 कॉलम्स हैं. इफ़ आई क्लिक ऑन 2 कॉलम्स एंड देन आई क्लिक ऑन अप्लाई ओके, तो आप देखो आपके टेक्स्ट में किस तरह से चेंजेस हो गए. नाउ यू कैन सी हियर, ये फर्स्ट पेज पे क्या था हमारा, हेलो स्टूडेंट्स. अब इसके नीचे जो भी आपने लिखा वो इसके नेक्स्ट पेज पे था, तो इसलिए आपका राइट साइड में आ गया. अब सेकंड पेज पे हम जाते हैं. ये देखिए यहाँ आ गया. अब इफ़ आई राइट हेयर समथिंग और आप नीचे 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 जाओगे, तो आप ये देखोगे कि जब आप पेज के एंड पे पहुंच गए हो, दिस इज द एंड ऑफ द पेज. इसके बाद जनरली जब हम एक कॉलम में टाइप करते थे तो क्या होता था, यहाँ से आप सीधा थर्ड पेज पे जाते, लेकिन अब कहाँ जा रहे हो, सेकंड पेज के राइट साइड पे. यानी कि हमने 2 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो आप कॉलम में जा रहे हो, सेकंड कॉलम एंटर किया आपने. अब देखो आपका पेज नंबर जो है दैट इज 2 ओनली एंड यू आर मूविंग टू द राइट साइड ऑफ द कॉलम. यू कैन राइट हियर एनीथिंग. जो भी आप लिखोगे ये कॉलम्स की फॉर्म में आपका अरेंज होता जाएगा. सो दिस इज द वे कॉलम्स आर मेड. If you want to make more than 2 columns, you can take that also. 3, 4, 5, that is your wish. You can arrange it in this way also, like right side is a little less and left side is a little more. Apply. Okay. Now you can see the difference here. So you can check each and every column type and practice it practically so that you can understand it more. Now the next option is inserting the images. Go to the insert option, insert menu, click on image. Image should be saved in your computer, then you can insert it. It will ask you for the location where your image is. So my image is on the desktop, 85634. This is my image. Click on open. Now this image has been inserted. Here you can see these small boxes around the picture. It will help you to increase or decrease the size of the picture. Okay, so this is your image and there are some various effects you can apply on the image. You can see from here, like you want to apply the border style, border color. This you can check. Okay, but these options will come when you have only selected it. If you have not selected, then these options will not be highlighted. The next is insert shape. If you click on the shape here, you will see a small arrow. It means it has so many options here: line, basic shapes, block arrows, symbols, shapes, callouts, flowchart. You can take any one of them. Like suppose I take this one, block arc. So you can take this one and the mouse pointer will change to the plus sign.
Then you have to click with the mouse and draw this shape. Click on the shape to increase or decrease the size. So this way the shape can be inserted anywhere on the page. Again, if this is selected, some options will come related to the shape. You can make the changes as per your requirement. Now again we click on the insert menu, and this is the shape. This is the text box. Text box is to write a particular text. Click on this one. Pointer changes to the plus symbol. Then make a box here. You can write separately in this box. टेक्स्ट बॉक्स ऐसा बॉक्स जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो. ओके. देन इंसर्ट, ये होता है आपका फ़ॉन्ट वर्क. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ़ॉन्ट वर्क? जैसे आपका वर्ड आर्ट होता है MS वर्ड में, तो इसमें आपका होता है फ़ॉन्ट वर्क. आपको कोई हेडिंग देनी है पेज की, आप स्टाइलिश वे में देना चाहते हो, तो यू कैन यूज द फ़ॉन्ट वर्क. लाइक सपोज आई वांट टू टेक दिस वन. क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन ओके, एंड हियर इट कम्स. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने इसमें जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो दैट यू कैन डू. आप इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं लाइक दिस. नाउ क्लिक हेयर, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो. लाइक मैंने लिखा हेयर क्लास 9. तो ये आपका इस तरह से फ़ॉन्ट जो है वो बन गया. इस तरह से आपका एक क्लास 9 आ जाएगा. ठीक है, वो अपने आप रिमूव हो जाएगा जब आप उसके लेटर्स को इरेज करोगे विद द हेल्प ऑफ बैकस्पेस की. ओके. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज इंसर्टिंग द स्पेशल कैरेक्टर्स. कभी कभी हम कुछ असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं, लाइक वी आर मेकिंग सम क्वेश्चन पेपर्स, तो हमें नीड होती है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की. जैसे ये आपका कॉपीराइट का सिंबल है. कभी कभी हमें चाहिए होता है @ सिंबल फॉर मेल एंड ऑल. तो उनको हम कैसे इंसर्ट करते हैं, ये कैरेक्टर्स ऑप्शन होता है. यहाँ से यू हैव टू टेक द डिफरेंट कैरेक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ से आप डिफरेंट कैरेक्टर्स ले सकते हो. ये आपके फ़ॉन्ट्स हैं, यू कैन टेक द फ़ॉन्ट्स फ्रॉम हेयर, चेंज द फ़ॉन्ट फ्रॉम हेयर. जो भी आपको इसमें से लेना है यू कैन टेक दैट वन एंड अप्लाई. जैसे हमने @ लिया, क्लिक ऑन इंसर्ट, तो यहाँ पे आपका इंसर्ट हो गया. जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा दैट कैरेक्टर विल बी इंसर्टेड एट दैट प्लेस. क्लियर दिस थिंग. इसके बाद आपका आता है पेज नंबर हो गया, हेडर फुटर वी हैव डन. सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव डन, जो मेन चीज़ें थी विच दैट आई हैव टोल्ड यू. एंड इन द फॉर्मेट मेन्यू नाउ यू कैन सी हियर दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. सो ये आपका बेसिकली सारी चीज़ें हो चुकी हैं. ठीक है, सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच यू नीड टू डू. Now just we have taken this shape, so we want to make some changes in the shape. हम इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं. तो from here you can see this is the fill color. If you want to change, you can make the changes from here. ठीक है, so this way the color will change. And this is the line color, that is the outside line color. So this way it will change. और ये आपकी लाइन किस तरह की आपको चाहिए that you can take, will change to this thing. कितनी थिकनेस चाहिए आपको लाइन की, दैट यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली. इस तरह से आपके जो शेप है उसके अंदर फॉर्मेटिंग की जाती है. आप शेप को रोटेट करना चाहते हो तो आप शेप को किसी भी पॉइंट पे जाके उसको रोटेट कर सकते हो. इस तरह से इट विल गेट रोटेटेड. ओके. देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. यू वांट टू इंसर्ट अ कैप्शन, यानी कि कुछ लिखना चाहते हैं. शेप्स को हम ग्रुप कर सकते हैं. ग्रुप मतलब जैसे हमारे पास 2 शेप हैं. चलो लेट अस डिस्कस दिस थिंग. जैसे कि वी टेक वन मोर शेप, इंसर्ट बेसिक शेप्स, सर्कल सेगमेंट, और हमने यहाँ पे एक सर्कल इस तरह का ड्रॉ कर लिया. नाउ लेट अस चेंज इट्स कलर वंस. We have taken this color. Now I want that कि जब मैं इस शेप को मूव करूं तो ये वाली शेप भी साथ में मूव हो. तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आपने सेलेक्ट करना है दोनों को. शिफ्ट प्रेस किया, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ग्रुप. तो अब क्या होगा कि आप इसको मूव करोगे
तो सर्कल भी साथ में मूव कर रहा है। आप सर्कल को मूव करोगे तो ये शेप भी साथ में मूव कर रही है। तो कभी भी इफ़ यू वांट दैट ऑल द शेप्स शुड मूव टुगेदर, तो उस केस में यू हैव टू यूज़ द ग्रुप ऑप्शन। अगर आप इन दोनों को दोबारा से सेपरेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इन्हें अनग्रुप कर सकते हो। तो अनग्रुप करने पे क्या होगा, ये सेपरेटली मूव करेगी और जो दूसरी है वो सेपरेटली मूव करेगी। दोबारा करते हैं इसको, ये यहाँ से अब अनग्रुप हो गया, ठीक है। सो दिस इज ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग, दैट इज फॉर्मेटिंग ऑन अ शेप. Now this is your assignment. The first question says what is page formatting. This we have discussed, that is making changes in the appearance of the page by making the changes like inserting the border or background color or increasing or decreasing the margins and all. Whatever we have discussed, that features you have to write down. Write the steps to insert header, footer and page number on a page. This also we have discussed. You have to click on the insert menu and from that you have to choose the header, footer and the page number option. In this question you have to write down the proper steps and then you have to write it properly. The third question says name and explain two page orientations. We have learned about two page orientations, that is landscape and portrait. Name them and give the explanation in one line each. Fourth question says write the steps to insert image, shape and special characters. This you can do easily. Write them stepwise. Fifth question says how can you divide the text into columns. Write the steps for the same. This also we have seen. We have to click on the format menu and then we have to go to the page style option and then we have to choose the tab columns. From there you can choose the option for dividing the text into columns. So you have to write the steps for the same. These are the 5 questions based on part 3. Part 3 of this chapter is completed. In the next class we will learn some more features based on digital documentation. One thing more, here we have used the LibreOffice Writer. If you can download this in your computer, that's very good, but if it is not available, then you can do this in MS Word also, because MS Word also has the same features. So whatever we have done practically, that you can try practically in MS Word also, and accordingly you have to write the steps. Whichever software you are using, you have to write the menus or the options according to the software.